Nucleic acids like DNA and RNA consist of nucleotides only. So can we call DNA and RNA as polynucleotides? Because they are made up of multiple nucleotides. DNA and RNA function as genetic material. ये last sentence को underline करो please. DNA and RNA function as genetic material. अभी अभी हम लोग ने उल्टा बोला था कि हम लोग जिसको यूज करते हैं DNA को, ठीक है ना. RNA जो होता है ना, दो टाइप का होता है, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक. यानी RNA can function as genetic material also and non-genetic also. We have learned non-genetic RNA as three types. Anybody? Anybody? mRNA, rRNA and tRNA. They are required for protein synthesis. So protein synthesis is a non-genetic function. तो इसलिए हम लोग उसको non-genetic variety में डालते हैं. But some of the viruses are having RNA as their genetic material. That is why the viruses can mutate. So viruses can function as genetic material. Absolutely नहीं, वैसा नहीं. But यहाँ पर एक generalized statement दिया हुआ है. What is the statement? DNA and RNA function as genetic material. But the question is, can DNA function as non-genetic material? नहीं. Can RNA function as non-genetic material? Yes. In the form of M, R and T. M stands for messenger RNA, R for ribosomal RNA and T for transfer RNA. स्कूल में पढ़ाई है, ठीक है. Now इसका use, इसका action, इसका work will be coming in genetics में आएगा अपने को, right? Transfer RNA, ठीक है. You will get this as a part of protein synthesis in genetics. इसका structure भी आएगा. Okay, so we've got the nucleotide and nucleoside वाला concept एकदम clear. Is the entire thing very clear, please? What are nucleosides and what are nucleotides? ठीक है. Now we can go to structure of DNA. Yes. Now to some extent DNA का structure has been covered in school, right? And the first word that we have learned about DNA in every syllabus, DNA is a double helix or a double helical structure, right? And the diagram that we can close our eyes and imagine is always this, right? इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा अपने दिमाग में, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इसी का फोटो देखा हमने और कुछ भी देखा ही नहीं है, right? But the fact is that various scientists had given different model structures of DNA. This was the most widely accepted कि DNA का structure ऐसे हो सकता है, which was given by Watson and Crick, for which they got the Nobel Prize. So for all practical purposes, we study this model of DNA. But just bear one thing in mind, that इसके अलावा भी there can be secondary other structures also. This model, this type of DNA that we are studying is called as bDNA. You can have a zDNA, aDNA, अलग-अलग type के DNA हो सकते हैं. But this type that we are studying is called as the bDNA. Now we said that DNA is a polynucleotide. That means it is made up of multiple nucleotides. So let us make some nucleotides and construct the structure of DNA. Sugar. Is this oxygen? Tip पे क्या है? Oxygen. This will become carbon 1. What is attached to carbon 1? Nitrogen base.
For simplicity purpose, let me take one as adenine, one as guanine, cytosine and thymine for practical purpose. के 4 types के होते हैं nitrogen base. ठीक है? Is the fifth carbon outside the ring? And what is attached to fifth carbon? Very good. So we have phosphate. ठीक है? Is this a nucleotide? Yes, everybody? Yes. Right? Now the first thing is to join this entire chain. The first thing is to join this entire chain. The phosphate is attached to which carbon of this nucleotide? Fifth. Right? But the same phosphate is attached to the third carbon of the next nucleotide. Right? Is this phosphate a part of this nucleotide? So phosphate अपने खुद के nucleotide में is attached to which carbon? Fifth. But with the next sugar का it is attached to third. Right? Look, for example, I am phosphate. Right? And here is carbon 3, carbon 5 of my own nucleotide. So are we connected together? Hold this please. What is this bond? What is this bond? Ester. Very good. Right? So we are from one nucleotide now. But he is carbon 3 of the next nucleotide. So as a phosphate, I am forming a bond with this carbon also. And this is also an ester. So phosphate के दोनों साइड पे कौन सा बॉन्ड है? That's why this linkage is called as phosphodiester bond. It is called as a phosphodiester bond. phosphodiester please everybody. ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा और नजदीक से देखना है अपने को phosphodiester, थोड़ा और नजदीक से देख लें. ये देखो. Yes please, try to see this diagram everybody. Sugar? Yes. I told you sugar देखा तो कहाँ पे नजर जानी चाहिए? C2. क्या है ये? OH मतलब राइबोस. वेरी गुड. ये क्या है? प्यूरिन pyrimidine. कैसे मालूम पड़ा? शाबाश. वेरी गुड. दिस इज कैसे मालूम पड़ा? पक्का समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिफाई करने का भी? ओके. सो दिस इज द फिफ्थ कार्बन नाउ. Is the phosphate attached to fifth carbon here? So this phosphate is actually belong to this nucleotide. The third carbon is having OH. Third carbon is having OH. तो यहाँ पर जो phosphoric acid का OH है and ये जो OH है दोनों साथ में आ गए और क्या निकल के बाहर? H2. So this becomes which type of a reaction now? Condensation, or called as dehydration. The water is removed out. Water is being removed out. And that's why you have a phosphodiester linkage. Are we clear this please? ठीक है. So phosphodiester clear हो गया. अच्छा ये जो sugar phosphate है ना, sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate, sugar, ये chain है ना पूरा, this chain, sugar phosphate is called as the backbone of DNA. The sugar phosphate is called as the backbone of DNA. So ये आपका sugar phosphate है और नाइट्रोजन बेस जो अटैच्ड है वो sugar phosphate को परपेंडिकुलर है, लेकिन बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? अंदर की तरफ, towards the inside, क्योंकि सेकेंड स्ट्रैंड यहां से आएगा अभी. Towards the inside, not towards the outside. This is towards the outside piece. So sugar phosphate number 1 is the backbone. We saw what is phosphodiester linkage also. Now trying to define the two ends of DNA. Please, ये सबसे important point है. DNA is a polynucleotide. Millions and millions of nucleotides are present in a single structure of DNA. In a single structure of DNA.
If it is a strand, it has to start at one place, end at another place. कहीं ना कहीं start होगा और कहीं ना कहीं end होगा. Sir, please stand up. Please stand up. Yeah, please stand up. Come here. Good motion, let's go. Chalo. It will start at some place, it will end at some place. So let us consider that ये पहला न्यूक्लियोटाइड है और ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है. इसके पहले कुछ नहीं है, उसके बाद में कुछ नहीं. Now look at this end. If this is the last nucleotide, that means the phosphate is free. Phosphate normally किसको अटैच होते हैं? थर्ड कार्बन. ऊपर तो कुछ भी नहीं है अभी. So the end where we find a free phosphate. This free phosphate is attached to which carbon? Fifth. This end is called as the C5 end of the DNA strand. और इसको हम लोग बोलेंगे C5 end, लेकिन डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे 5'. इसको डिनोट ऐसे करेंगे. लिखते हो कैसे लिखेंगे इसको? बट पढ़ते हो क्या बोलेंगे? This is C5. Come to the other end. Now in this, the C3 we saw in the diagram. Does the C3 have an OH? Now is this normally C3 occupied है? नहीं. C3 कहाँ occupied है? किसके साथ bond बना रहा है? Phosphate के साथ में. लेकिन यहाँ तो नीचे कुछ भी नहीं है. So is the OH free now? So the end at which the free OH is present at third carbon. So this end is called as the C3 end, और इसको denote ऐसे करेंगे 3'. So now, what are the two ends of the DNA? 5', 3'. How do you define a C5? Free phosphate attached to fifth carbon. How do you define a C3? Free OH at the third carbon. So that makes it C3 and C5 now. ठीक है. So ये हो गया अपना पूरा एक स्ट्रैंड, पूरा एक स्ट्रैंड. लेकिन डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो अभी सामने दूसरा स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट करना है. राइट. मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं दूसरा स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं. डायग्राम के नीटनेस को इग्नोर करना प्लीज. मेरा डायग्राम इतना भी बुरा नहीं है, बट लेकिन अंडरस्टैंड प्लीज. आई हैव क्लियर माई इंटरमीडिएट. हाँ, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट दोनों क्लियर किया मैंने. ओके. हाँ, पता है तुमने भी क्लियर किया. ठीक है. You know, when we were in school, so we were asked to give exams like elementary and intermediate, and we had one drawing teacher, and unfortunately I had loggerheads with my drawing teacher. क्या बोलते 36 का एकदम. He was very irritated with me, I was also very irritated with him, and we both expressed it very clearly. मतलब no holds back. मतलब उसको मालूम था कि मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, बट ठीक है, टीचर है तो टीचर है, कुछ नहीं बोल सकते. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो जब इंटरमीडिएट की बारी आई ना, तो he said everybody will not be taken for intermediate, you have to pass an exam, preliminary exam. फिर सब जो क्वालिफाई होगा वो करें. ठीक है. अब मेरा था एक वीकनेस, मुझे ह्यूमन फेसेस बनाने को नहीं आता. बहुत था. स्टिल लाइफ सब एकदम फर्स्ट क्लास होता था, लेकिन ह्यूमन मेमोरी ड्राइंग वाज वेरी बैड. मेमोरी ड्राइंग वाज वेरी बैड, एंड ही न्यू दैट, एंड ही गिव स्पेसिफिक टॉपिक्स. मेरे का यू बोलता है, you make a scene at swimming pool full of human faces. You make a scene at the swimming pool. ठीक है. I knew that I was फंस गया मैं. He would not clear me,
sit for intermediate. ठीक है, नो प्रॉब्लम. मैंने अपना ड्राइंग सबमिट कर दिया. वो बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया. मैंने क्या बनाया, एक बहुत बड़ा गेट बनाया, स्विमिंग पूल क्लोज्ड. उसने क्या बोला था, 80 ने 10 बाहर से अंदर से तो he got so wild, he got so wild. Here you know what principle के पास. चलो, no problem. Because I knew technically I was correct. The principal agreed. Technically he is right. He had to clear me, right now. But till the end, हम लोग हमेशा it happens, right? ठीक है, so right. आज भी I don't know how to make you this. ठीक है, चलो let's come back to the topic please. Right? अब ये दूसरा स्टैंड सामने आया, कुछ अलग दिख रहा है इसके बारे में? उल्टा है, राइट ना? हाँ, ठीक है ना? अब चूंकि शुगर की पोजीशन नीचे है, शुगर की पोजीशन नीचे है, तो ये ऑक्सीजन हो गया. अब ये कार्बन नंबर 1 हो गया, नाइट्रोजन में अटैच्ड है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5th कहां पे आ गया? फॉस्फेट. सही बराबर है ना? So phosphate, will it go with the third of the next one? Phosphate will go with the third of the next one. बन गया अपना चेन, आ गया फॉस्फोडाइएस्टर भी. ठीक है, let's define C3 and C5. यहां पर C3 आ गया फ्री, so ये बन गया C3 और ये बन गया C5. Are the two strands opposite in direction but parallel? So they are called as anti-parallel. So we say the two strands of the DNA are anti-parallel to each other because they are parallel but running in the opposite direction. One is ascending, one is descending. Right now, one is Borrelli churchgate, one is churchgate to Borrelli. Parallel लेकिन running in opposite directions. ठीक है? अब there is one more thing that we need to define, and that is nitrogen base. Now it is clear that nitrogen bases are perpendicular but pointing inwards. अंदर की तरफ है. Now these two bases who are आमने सामने now, they form a base pair. They form a base pair. Now the rule for a base pair is, मुझे पता है तुमको आता है ATGC, है ना? मुझे पता है तुमको ATGC आता है. Can you give me a minute please? Just give me a minute. phone calls which you cannot avoid, and one of them is daughter. Right, no? Barabar? Okay. Now, they too form a base pair. Now, the rule in DNA is that in a base pair,
there will always be one purine and one pyrimidine. One of them will be a purine and the other will be pyrimidine. So if this is adenine, what has to be there? pyrimidine में थाइमिन हो सकता है या साइटोसिन हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमको मिलता है सिर्फ थाइमिन। जब हम लोग प्यूरिन pyrimidine का कंपैरिजन करते हैं तो वी से इट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इफ आई नो द वैल्यू ऑफ वन आई कैन डिटरमाइन द सेकंड वैल्यू, दैट इज व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री। पता है डिडक्ट करना है ना, मालूम, ओके। सो यहां पर एडेनाइन है तो वहां पे थाइमिन है। एडेनाइन थाइमिन उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे तो दोनों ऑप्शन में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर भी स्पेसिफिक अगर बोलेंगे तो एडेनाइन के सामने विल ओनली हैव थाइमिन, ग्वानिन के सामने यू विल ओनली हैव साइटोसिन, साइटोसिन में ग्वानिन एंड थाइमिन में एडेनाइन, राइटली। सो बेस पेयरिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री? नो, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में इट इज मोर स्पेसिफिक इन नेचर। नाउ दीज बेस पेयर्स एडेनाइन एंड थाइमिन आर joined by a double hydrogen bond, whereas guanine and cytosine are joined by a triple hydrogen bond. So if every purine के सामने there is a pyrimidine, so जहां भी purine है सामने pyrimidine होगा और vice versa, pyrimidine है सामने purine होगा। So is it right to say that the number of purines will always be equal to number of pyrimidines? Because they are always in a pair now. So what is the rule for us? The number of purines will always be number of equal of pyrimidines. Which are the purines? A and G. And pyrimidines C and T. Will A always be equal to T? Will G always be equal to C? So A plus G will always be equal to C plus T. So what is the rule? A plus G will be equal to C plus T, and this is called as Chargaff's rule. This is called as Chargaff's rule. Chargaff mat bolna usko. Yes, this is Chargaff's rule. A plus G is equal to C plus T. Chargaff's rule is applicable only in DNA, not in RNA. Why? DNA, RNA सिंगल स्टैंडर्ड है, सामने कोई पेयरिंग ही नहीं होगा तो, ठीक है ना, ओके। सो डबल हेलिक्स पता चला अपने को। शुगर फॉस्फेट जो है वो बैकबोन है डीएनए का, स्ट्रक्चर बन गया अपना, सेम स्ट्रक्चर सामने बना है अपना। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड वाला पॉइंट हो गया अपना, Chargaff's रूल हो गया। Chargaff's रूल पे यू कैन हैव न्यूमेरिकल्स, राइट। एक एग्जांपल देता हूं, एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं। इन अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए द नंबर ऑफ एडेनाइन्स आर 22%, फाइंड द नंबर ऑफ साइटोसिन्स। सो इज एडेनाइन 22, सो थाइमिन आल्सो विल बी 22, so how much percentage? 44. कितना बचा? 56. Are they equal? हाँ, so both of them will become 28 now. So simple numerical. See, numericals in bio are only to test your concepts. Only to test your concepts, not your number crunching ability, which we know, including me. Don't worry. पहले मैं बाद में तुम, okay? ठीक है? Now the last part of our discussion is dimensions of DNA. What are the different dimensions? The diameter of DNA is 2 nanometers. I have given you this diagram. This is a double helix that you know. A double helix, that means 2 strands are coiling around an axis. Can you see center में axis है? Dotted line है center में. That is the central axis. So this entire distance is the diameter पूरा। So यहाँ पर 1 नैनोमीटर है, वो रेडियस हो गया आपका, ठीक है।
So diameter of DNA 2 nanometers or 20 angstrom units. Right now, your NCERT is mentioning the units in terms of angstrom units, but we have to do in nanometers also because they can ask. इसलिए मैंने दोनों units में explain किया. Please. Now, from this point, the DNA strand is starting to turn and coming back to the same point. Is this the same point here now? So the distance between these is 1 turn of DNA. That means DNA has completed 1 turn. So the length of 1 turn is 3.4 nanometers or 34 angstrom units. 34 angstrom units. If you are given in a given DNA, the length of the DNA is 34,000 angstrom units. So how many turns would be there? 1000. ऐसे कैलकुलेशन हो सकता है ना अभी तो, राइट? तो प्लीज ध्यान रखना. Now each of the strand, यहाँ पर what is these now? Base pairs are there. 1 turn of DNA has got 10 base pairs. 1 turn of DNA has how many base pairs? 10 base pairs. If base pairs are 10, what is the number of bases? 20. ठीक है? In a given DNA, the length is 34,000. Can you count the number of bases now? तो टर्न्स कितने हो गए? 1000 टर्न्स. तो फिर बेस पेयर्स कितने हुए 10 के हिसाब से? 10,000. तो बेसिस कितने हुए? 20,000. समझ रहे कैसे न्यूमरिकल्स आ सकते हैं? प्लीज उनको सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है कि आपको पता है कि नहीं. What is the length of 1 turn? How many turns you have? In 1 turn, how many base pairs are there? How many bases are there? ठीक है? So what is the length of 1 turn, friends? 3.4 nanometers or 34 angstrom. In 1 turn, how many base pairs are present? 10 base pairs. Right? अब if 1 turn is 34 और उसमें we have 10 base pairs, so the distance between 2 successive base pair will be 3.4. पूरा लेंथ कितना? 34. उसमें बेस पेयर कितने? 10. सो 2 बेस पेयर्स के बीच डिस्टेंस कितना हो गया? 3.4 हो गया. बट ऑब्वियस है. सो इफ दिस इज 1 बेस पेयर, दिस इज अ सेकंड बेस पेयर, सो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? 3.4. बट अगर सामने से देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा. लेकिन अगर इसी चीज को आप साइड से देखेंगे ना तो ये ऐसे नहीं दिखेगा, टर्न दिखेगा. बिकॉज वो डबल हेलिक्स है ना, वो टर्न होते जाएगा. सो 2 बेस पेयर्स कभी भी पैरेलल नहीं रहेंगे. हमेशा एक एंगल रहेगा उनके बीच में, एंड दैट एंगल विल बी 36 डिग्रीज. बिकॉज 10 बेस पेयर में जब पूरा टर्न खत्म होगा तो कितना डिग्री टर्न हो जाएगा? 360. दैट इज व्हेन यू से द एंटायर टर्न इज कंप्लीट. यहां से शुरू होके फिर से यहां पर आएगा तो कितना डिग्री टर्न मारेगा? 360. और उसमें कितने बेस पेयर्स है? 10. तो 2 बेस पेयर्स कितने टर्न मार? 30. एवरीथिंग विल बी टर्निंग 36. सो 10th बेस पेयर में कितना टर्न हो जाएगा? 360 हो जाएगा. सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 3.4, बट द एंगल बिटवीन 2 बेस पेयर इज 36 डिग्री. क्लियर है? So, if you have a wicked and a cunning examiner, not like me, right? Can you be asked the angle between the first base pair and the 5th base pair? 36 multiplied by 5 करेंगे, आपको 180 आ जाएगा. 30 जो भी है आपका. So you see, ऐसे घुमा के वो लोग पूछ सकते हैं. यही सब कुछ आपको जेनेटिक्स में भी आएगा. बढ़ के इससे थोड़ा सा आगे भी. लेकिन जब जेनेटिक्स सर पढ़ाएंगे तब ये सारे योर बेसिस शुड बी रेडी ऑन विच यू कैन स्टडी समथिंग एल्स आल्सो. राइट? ये सब वापस पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. ठीक है? सो ऑल दिस डायमेंशंस हैव टू बी डन प्रॉपर्ली प्लीज. इफ वी कैन गो टू द नोट्स प्लीज. नोट्स में
Yes, the nucleic acids, DNA, RNA part. Yes, I think we have covered all the points. I have given you an extra diagram also यहाँ पर. ये NCERT वाला diagram नहीं, ये extra diagram दिया मैंने आपको for your understanding, please. Right? Look at the last point in the notes. Last point in the notes. वहाँ पर phosphodiester का mention किया. In a nucleic acid, a phosphate moiety. ये NCERT का word है. A phosphate moiety. Something which comes between is called as a moiety. Is phosphate between two carbons? कौन से कार्बन? खुद के न्यूक्लियोटाइड का fifth और next वाले third. So is phosphate in between? So phosphate has been labeled as a moiety. Phosphate moiety. ये word आपको 9.8 में मिलेगा. आपके NCERT के 9.8 discussion में you'll get this word moiety there. ठीक है? So we have done entire nucleosides, nucleotides, all the 16 types, and we have done the structure of DNA. Yes, please. Are we clear about this? Okay. Now for homework. Homework में obviously I'll post the MCQs. Should we continue this MCQ thing? Yeah. Right? If it's a part of homework, it is done. Yeah. Otherwise, it is not done. It has been DCT. It makes my job of setting DCT more difficult. मैं और questions कहाँ से लाऊं? सारे options तो हो गए अभी. Yes. Please. ये जो nucleic acids वाला part है, last वाला part, ये आप सिर्फ एक बार लिखेंगे. ये वाला diagram जो है ना, ये वाला diagram, right? ये आप 2 बार बनाएंगे, please. One time you will see and you will try to draw the other time. This diagram, please. Normally I do not ask to make diagrams, but in this case an exception because this is helping us to understand the structure, please. ये वाला यहाँ से भी है ना, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है. Quietly. It is there in the PDF also. It is there in the PDF also. Please, I have to make a small request, please. The request is, please listen to me. When you are drawing this diagram, right, you will draw this diagram, but when you are drawing this, you will actually talk to yourself. It sounds funny, but I know it works. When you are making this sugar, you will say, fifth is outside the ring. You will say to yourself, fifth is outside the ring. The more number of, it should get hammered here that fifth carbon is always outside the ring. Nitrogen base is always attached to first carbon. मुझे ये सारे facts next time बराबर चाहिए. मैं पूछूंगा क्लास में. All these are possible likely questions in the exams. Please. I'll post the questions right today. The number of questions with respect to nucleic acid is very less, but nevertheless we will do that. Yes, Veni, bolo. This 4 and 6, so how many numbers? 4, 6, whatever is fine is okay. No problem. nahi. Are you clear with the homework, please? Yes. I have one more list for you all. लिस्ट पढ़ा है आज.